All of you come on the screen. Okay. So we are starting with something very important today. Okay. Even from exam point of view, that is cell biology and biotechnology. Okay. There are some discrepancies which I found in the textbook content. थोड़ा सा out of लगा मुझे. Okay. But still, whatever topics are included, they are worth discussing and they're interesting also. And बहुत सारे applied concepts को इसको touch upon किया है in this lesson. Okay, so what I felt was like whoever were there in the panel, they wanted to include everything under one heading. इसीलिए cell biology and biotechnology बोल के सब कुछ डाल दिया. Okay, so this lesson contains more of biotechnology and very little bit of cell biology. Hardly anything, because cell biology is actually totally different. तो इस लेसन में जो इंक्लूड किया गया है that is not fully cell biology. Okay, so whatever it is doesn't matter. अभी जो दिया है we have to go ahead and whatever you are studying in this lesson काफी हद तक ये आगे भी काम आएगा whenever you will pursue a course in any part of biology. तो इसलिए whatever is there in this topic, pay attention properly. Okay, learn the examples, understand the contents. ठीक है? Okay, everyone come on the screen. चलो, आदित्य, मृणाल, प्रणव तो नहीं आ पाएगा, आनंदिता और आदित्य बीच बीच में आता है तो पूरा लेक्चर बैठता नहीं है, शायद तू निकल जाता है. यस Sure. आदित्य, यस आनंदिता. मेरी एक बुक रह गई है, मैं 2 मिनट में लेके आ रही हूँ. ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करें फिर. ओके, नाउ टेल मी, according to whatever you all have learned in your lower classes till now, what do you mean by cell biology? Sneha. The study of cells, a cell division, or any other aspects of cells is Okay, known as cell biology. so if I ask you what is a cell, I think you have the answer. What is a cell? That is the main basic question. नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग. हाँ, दैट इज समथिंग व्हिच कम्स एट एवरी लेवल. कॉलेज में बीएससी एमएससी में भी सेल पढ़ाता हूँ. व्हाट इज Sir, अ सेल? यस आनंदिता, यू आर बैक. तूफान एक्सप्रेस. या बोल. कम ऑन द स्क्रीन. यस आदित्य, मृणाल. आंसर नहीं दिया स्नेहा. व्हाट इज अ सेल? नहीं मिल रहा है. ओके, आनंदिता कैन आंसर दिस. व्हाट इज अ सेल? Building block of our body. Building block of our body. Any other answer, anyone? I'm expecting something Functional and very important. structural unit Repeat again, of Anandita. a living organism. Okay. सिंपल से सिंपल अगर वर्ड्स में बोला जाए सेल के बारे में, तो इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ. दैट मीन्स इट इज द functional and structural unit of life. When you say life, it means all the living organisms. Okay, सबसे छोटा यूनिसेल्यूलर से लेकर the gigantic organisms which are highly multicellular ones. So all of them are ultimately made up of living cells. Okay, there is at least one living cell in the entire body. So during, now you have studied evolution, so you know very well when the life has begun on the earth, it was as a result of chemical processes which took place. तो ये chemical process जो होता रहा,
evolution के time पे, because of which life originated on the earth, and we say that life began on the earth in the water bodies. So water bodies में, because of some chemical reactions which have taken place, there was one independent entity that got formed. That was the first living cell. It was not exactly like the cell that we have today, but it was a pre-cell. एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके. And then there was further modification over a period of years. So जब इतने modifications होते रहे तो advancement होता रहा. So the first cell that formed was the most primitive prokaryotic cell. I hope all of you are aware about prokaryotic and eukaryotic cell. Yes? Which of these do we human beings have? Pro or eukaryotic? We have which one? Bolo. We are made up of which type of cells? Eukaryotic. Eukaryotic, that means the advanced ones. Okay, our cells are more complicated as compared to the prokaryotic cells. When you say prokaryotic, that means they are made up of, they are present in the unicellular organisms like bacteria and cyanobacteria, the blue-green algae. They have prokaryotic cells, but the advanced ones have eukaryotic ones. So fungi, plants, animals, lichens, all these have eukaryotic cells. Even amoeba, paramecium, they also have eukaryotic cells. Okay, so here the word is cell biology. The cell biology is also called as cytology. Okay, so this is actually a very, very vast topic. And the study and the research in these topics are never ending, because now we have access to a lot of technologies. Earlier, nobody was aware about what is a cell, because nobody was able to visualize that. When microscope was invented, then people came to know that yes, there are something called living cells. Can you tell who invented the microscope? Who invented the microscope? Robert Hooke. No. Robert Hooke is associated with cell biology, but he did not invent the microscope. माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया? I want everyone to और बहुत बड़ा नाम है, पता है मुझे. try to tell the spelling. Sneha Towns wants to answer, I think. जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, अब उसका गलती तो नहीं है ना, इतना बड़ा नाम रख दिया. Starting with which letter? Starting with which letter? उसका नाम? The one प्रणव ने टाइप किया शायद. नहीं, ठीक है. No, Pranav, it is not Galileo. I am asking about microscope. Something Anton, कुछ तो Anto something. The name of the person is, I'm typing it here. If you want, you can note it down. Anton van Leeuwenhoek. Okay, he was the one who invented the microscope, the first primitive microscope. He was the person. Then who was Robert Hooke? Robert Hooke was the one who observed a living cell for the first time under the microscope. And he discovered a living cell for the first time. Okay, in fact, जो नाम पड़ा है cell, वो भी Robert Hooke ने ही रखा है. Okay, a very primitive microscope he had used, and उसको use करके, okay, plants के material में जब उसने देखा microscope के अंदर, तो he saw, Robert Hooke saw that under the microscope there are compartments like this, इस तरह के छोटे छोटे ऐसे compartment जैसे दिखने लगे. Now we know very well know that they are cells, but he saw it for the first time. तो जब उसने ऐसा देखा, तो immediately he recollected something. It was way long back, 16th 17th century का बात है ये. Okay, so that time when he saw all this, now उसको एकदम से देख के क्या लगा कि these are like very small rooms.
and that time there used to be monks who used to sit in small rooms like this and used to meditate, ऐसे छोटे छोटे रूम में बैठकर। तो जैसे ही रॉबर्ट हुक ने ये देखा, उसको याद आया कि हाँ, ये तो छोटे छोटे रूम की तरह जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, एंड उन रूम्स को उस टाइम पे सेल्स बोलते थे। So Robert Hooke immediately said, okay, these are like cells. That's how the name has come, cell. That was the beginning, okay, for the first time. Actually, there is something called a cell theory. Cell theory करके start हुआ था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि these are the cells, so others also got interested. And it was, as I'm telling you, 17th century का बात है. So there was very, very primitive technology and hardly any communication. आज के जमाने में क्या हो जाता है कि somebody in discovers something very interesting, there is immediate facility available to call up someone, to email someone, या put up in the website or spread the word. उस टाइम पे ऐसा नहीं था फैसिलिटी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, पेपर भी ठीक से यूज नहीं करते थे, एवरीबडी वाज नॉट एक्सेसिबल टू इट, दैट वाज द सिचुएशन। तो रॉबर्ट हुक ने जब इतना बड़ा चीज डिस्कवर किया, तो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में सबको पता चलने के लिए ही काफी टाइम लग गया। And then some people who were able to understand कि okay, there is something remarkable being discovered, so other people who are of this interest, scientific interest, वो सोचने लगे कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। एंड माइक्रोस्कोप वगैरह आसान नहीं मिलता है। नाउ इन टुडेज वर्ल्ड आल्सो नोबडी कैन इजीली बाय अ माइक्रोस्कोप सो इजीली। कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में ले सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन आल्सो परचेज, बट स्टिल इट इज कॉस्टली। तो आज ही अगर ऐसा सिचुएशन है, तो यू कैन इमेजिन दैट टाइम व्हाट विल बी द सिचुएशन। इट वाज जस्ट इन्वेंटेड, राइट? सो अदर पीपल हु हैड एक्सेस टू दिस फैसिलिटीज, उन्होंने फिर माइक्रोस्कोप में देखना शुरू किया। सो देन देयर वर टू अदर पीपल, okay, there were two other people whose name was Theodor Schwann and Matthias Schleiden. These two people, one was a botanist and one was a zoologist. Okay, now these two people discovered something. थियोडोर श्वान ने डिफरेंट एनिमल्स के पार्ट्स में देख लिया कि दे आर आल्सो लुकिंग लाइक दिस। मैथियस श्लीडन ने भी डिफरेंट एनिमल्स के पार्ट्स में देख लिया कि दे आर आल्सो लुकिंग लाइक दिस। तो ये तीनों का मिलाकर एक सेल थियरी बन गया। द फर्स्ट पॉइंट वाज all living organisms are made up of cells. Secondly, a cell is the structural and functional unit of life. That means you take any living organism on the earth, it will be made up of cells. ये बाद में वो रियलाइजेशन आने लगा कि yes, that is what life is made up of. तब तक ये नहीं पता था कि सेल के अंदर क्या है करके। Now those things are more advancing. Okay, सिर्फ इतना पता चला कि yes, there are cells. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। देन देयर वाज अनदर पर्सन हुज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन। एक और रॉबर्ट, एक हुक और एक ब्राउन। ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन वाज द वन हु डिस्कवर्ड समथिंग रियली रिमार्केबल। ये जो सेल्स था, इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी है करके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। बिफोर दैट इवन दैट वाज नॉट नोन टू पीपल। वो भी कैसे, बस माइक्रोस्कोप में जैसे दिखते छोटा सा डॉट, उतना ही पता चला। तो रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व कि ये ऐसा डॉट जैसा स्ट्रक्चर हर सेल के अंदर नजर आ रहा है, तो व्हाट इज दैट। फिर उसके बारे में और डिस्कवर करना शुरू किए। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, इट वाज जस्ट अ स्लाइटली एडवांस्ड वर्जन ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, एक्चुअली एंटन वैन ल्यूमेनहोक का नाम लेते हैं इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप करके, बट देयर वाज अनदर पर्सन बिफोर दैट जिसने माइक्रोस्कोप का थोड़ा आइडिया दिया था। दैट पर्सन इज नॉट वेरी फेमस। Okay, his name is Zacharias Janssen. Okay, ये क्या काम करता था Zacharias Janssen? He was an optician. चश्मा बनाने का जो होता है ना, वैसा काम था उसका। तो उसको थोड़ा आइडिया आ गया कि चश्मा बना के हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर पा रहे हैं, तो why can't we invent something which will magnify things a little more? So he tried to do something like that, but Anton van Leeuwenhoek ने उसको बहुत अच्छे से बिल्डअप करके माइक्रोस्कोप बना दिया।
That is why the actual credit of inventor of microscope goes to Leeuwenhoek. Okay, तो एक जन का आइडिया दूसरे के लिए दूसरा आइडिया बन जाता है. That's how it works. तो सेल बायोलॉजी में भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ. The first foundation was laid by Robert Hooke by discovering the cell. Then came these two people, Theodore Schwann and Matthias Lydon. एक और इंसान है. Cell biology से related there are too many people who are worked. Okay, Rudolf Virchow. He was another German scientist. Okay, Rudolf Virchow. इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला है लैटिन में, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. सुना है कभी? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, इसका मतलब यह है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली. दैट मीन्स कहीं पर भी कोई भी नया सेल है अगर, वो एक ही प्रोसेस से बन सकता है, वो है किसी और सेल का सेल डिवीजन से. देयर इज नो अदर वे दैट अ न्यू सेल कैन बी फॉर्म्ड. That was also, this point was also added to the cell theory. So all living forms, living cells are made up of living forms are made up of cells. A cell is the structural and functional unit of life. All cells arise from the pre-existing cells. Okay, and nucleus is known as the brain of the cell. ये सब एक एक डिस्कवरी के बाद सेल थियरी बन के कंपाइल हो गया. So people started coming to know, okay, कि अच्छा सेल ऐसा है and that is how life works. Then the curiosity arise कि अभी न्यूक्लियस भी पता चला जो हर सेल में होता है, and every organism is also made up of cells. So what is there inside the nucleus? Now that was the next question. तो अभी इतना चिंटू सा न्यूक्लियस है, कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या है? Can anyone tell me कि a normal fully grown adult human being approximately उसके शरीर में कितने लिविंग सेल्स हैं या कितने सेल्स हैं? A normal adult human being. बोलिए लगाओ, कितने सेल्स हैं अपने शरीर में? यस, मिलियंस. मिलियंस. और दूसरा कोई आंसर? ट्रिलियंस होंगे. बिलियन यू सेड. ट्रिलियन. रिपीट अगेन. आराम से. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. TRILLRONS. ओके, और एनीवन, एनी अदर आंसर? We are made up of 100 trillion cells approximately. We cannot give a fixed number because अपने शरीर में number of cells keep on changing. Okay, you go and wash your face, the number of cells will change. एक ताली बजाओ, number of cells will change. Okay, you cut your nails, the number of cells will change, right? So the number of cells keep on changing. So approximately we have 100 trillion cells. जो अपना ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है, only that part contains about 100 million cells. Okay, so now you can imagine what are we made up of, and that's how what other organisms are made up of. बोल स्नेहा. बट सर नेल्स में सेल होते हैं नहीं ना? Yes, they're वो dead वेस्ट cells. रहता They're है. dead cells. Cells है but dead cells है. Okay, nails होते हैं, hair होते हैं, they are dead cells, right? Okay, so सर yeah, बोलो. नर्वस सेल होता है, वो डिवाइड नहीं होता ना? नहीं होते. नर्वस सेल जो बचपन से पैदा होते हैं, जो मिलते हैं वही रहते हैं. They neither grow, they neither divide, and the same is the case of our eyes. बचपन में जो आंख रहता है ना, उसका साइज बढ़ता है ना छोटा होता है, वही सेम रह जाता है लाइफ टाइम. ओके, बाकी सारे ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, बट दीज विल रिमेन द सेम. ठीक है, या. so the more you study about this, the more fascinating facts you come to know. है कि नहीं? इसीलिए there are many people who are working in this field.
क्योंकि इसमें इसके बारे में तो आज भी इतना रिसर्च है कि इट इज नेवर एंडिंग. यू कीप ऑन डिस्कवरिंग, यू कम आउट विद मोर एंड मोर फैक्ट्स. ओके, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टडी. एंड सेल बायोलॉजी स्टडी करने के लिए सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो है अपना टेक्नोलॉजी. ओके, ओनली माइक्रोस्कोप विल नॉट डू. नाउ व्हेन यू से माइक्रोस्कोप, you know very well कि बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप हैं. एटलीस्ट इन टुडेज डेट इफ यू सी, इट्स नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वी नो एंड वी यूज इन द कॉलेज. वो तो एकदम बेसिक वर्जन है, द लाइट माइक्रोस्कोप. आज तो इतने एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, इनफैक्ट द वन लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ह्यूज वन. इट कैन मैग्नीफाई एनीथिंग इवन अप टू 10 लाख टाइम्स. ओके, तो जो उसका साइज होगा उससे 10 लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकते हैं. That's how we have advanced. So that is the work of people who are into physics, who are into instrumentation, who are good at engineering. वो लोग ऐसे चीजें डिस्कवर कर सकते हैं इस फील्ड में. दिस इज नो डाउट बायोलॉजी, बट इस फील्ड में इवन पीपल हु आर इनटू कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड. वो लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज देर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल. ओके, कि हम लोग ने कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना है, या उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन में जितने अमीनो एसिड्स हैं, एक सॉफ्टवेयर रन कर दो तो एक ऐसा लंबा सा लिस्ट बन के आएगा, एक डेटाबेस. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके अलग से फील्ड है विच इज इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जांपल, अ साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन बॉम्बे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का किसी एक प्रोटीन के ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज रिसर्च, तो ही कम्स अक्रॉस द फाइंडिंग्स. तो एक कॉमन डेटाबेस होगा where he is going to put all the information, and that database will be accessible to every scientist in the entire world. So somebody in Australia, somebody in say Africa, कोई और इसी फील्ड में काम कर रहा है तो इमीडिएटली उसको एक्सेस मिल जाएगा. So that's how the information gathers and is spread to everyone. तो इसने जो डिस्कवर किया, इसके बेसिस पे some other person can do some other research. So in today's world, technology has made this possible. And then there are conferences, seminars, workshops, webinars, where scientists from different people come under one roof and they put across their findings. There are discussions. तो उसके वजह से आइडियाज जो है वो डिसेमिनेट होते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ दिस रिसर्च फ्रेटर्निटी वर्क्स. तो जब तक ये सेल बायोलॉजी का पार्ट है, सेल बायोलॉजी में देर आर टू मेनी फील्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद सेल बायोलॉजी. It's not just that you become a cytologist and you will work only on cells. You can always do interdisciplinary research. Interdisciplinary मतलब you will associate cell biology with many other fields. जैसे यहाँ पर एक है, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी बोलते हैं. ओके, वेरी यू सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी करके बोलते हैं, वेर यू स्टडी अबाउट द सेल, the parts of the cell and its structure. Okay, and you study about the functionalities of all the cell organelles also. Okay, then comes a field called genetics. You are aware about Gregor Mendel? 9th standard में था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाँ है ना. हाँ तो जेनेटिक्स का फाउंडेशन मेंडल ने लगाया. ओके, ग्रेगोर मेंडल ने. सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ, कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी से एसोसिएटेड है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन नेटवर्क containing the chromosomes made up of DNA containing the genes. So study of genes and their inheritance is nothing but genetics. So if you are studying cytology, you will study a little bit of genetics also, and vice versa. Okay, molecular biology, जो और हम लोग डीप में जाते हैं. All of you are very well aware about transcription, translation, mutation and all. वो सब जो हमने स्टडी किया, that was a part of molecular biology. So whatever molecules are found inside a living cell, how do they function and how are they regulated? That comes under molecular biology. Then physiology. Physiology मतलब the chemical aspects. Biochemistry and physiology करके आते हैं. Okay, कि proteins, okay, और
न्यूक्लिक एसिड्स, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ओके, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स यू विल स्टडी। तो ये सब चीजें सेल बायोलॉजी से एसोसिएटेड है। देयर आर मेनी अदर फील्ड्स आल्सो, ओके, सो दिस फील्ड बिकम्स नेवर एंडिंग। So you should have a strong base of chemistry also for all this, because पूरे लाइफ का जो बेस है वो केमिस्ट्री है अल्टीमेटली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। so have you all understood till now whatever we discussed? ये फाउंडेशन है लेसन का, ये समझना जरूरी है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस एज वन पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ओके। so now when you are studying about cell biology, अभी ये सब मैंने बता दिया कि okay, scientists work like this, they have their laboratories and then they interact with each other, they put across their research papers and all, okay, so this way when they work, where actually they work? Any answer? साइंटिस्ट लोग कहाँ काम करते हैं? यहाँ अनम्यूट करके बोलो, where do they work? Laboratories. So where are the laboratories? उनके घर पे होते हैं? Institutes में होते हैं. There are institutes, there are research institutes. So there are research institutes which are based on certain fields of biology. Okay, so research institutes किसके लिए होते हैं? कि so that they are able to provide a facility where scientists and researchers can work, they can come across different findings and they will add to the database. So in the olden days, the research institutes were very, very less, hardly anything, and very few people working. But in today's date, the number of research institutes have increased like anything. India as well as outside. India में पहले तो hardly कुछ नहीं था, because ज़्यादा लोग भी इस फील्ड में नहीं आते थे, but अभी आने लगे. There are people working on it. Okay, so this is very nicely given in your textbook, showing that कि if you are interested in this kind of a field, ये चीजें तुम लोग को पढ़ना समझना अच्छा लग रहा है, इसमें काम करना है, so you can always join such institutes. Okay, you can always join such institutes and you can pursue your studies. Normally मैंने ये देखा, I don't know whether it is true for all of you, कि whenever you say a scientist or researcher, सबको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस से अपने से नहीं होगा करके. There are some people, student level पे generally यही thought आता है, right? Because of lack of awareness. How many of you agree with this? लगता है साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ा काम है? पहले लगता था, मतलब छोटी थी जब भी सिक्स और फिफ्थ में तभी लगता था, मतलब साइंस के रिलेटेड कुछ हुआ तो वही रॉकेट डॉक्टर वही सब होता है. अरे नहीं, that is a misconception and that is what is generally portrayed. That's the reason ये thought आता है दिमाग में. Even we have gone through all this, right? Even in my school days, scientist ऐसा कुछ बोलता तो लगता था अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं. But when I actually did my own research, तब पता चला कि it is actually interesting. All of you know very well, even I have worked in one of the research institutes, a very good institute in Dehradun. So that experience was very, very experiencing, worth. 2-3 institutes में काम किया मैंने. I have 2-3 publications also. International level पे research publication है. Okay, so that becomes very interesting experience. You are in touch with different Sir? people in different parts of the world. Yes, Anandita. रिसर्चर्स जैसे पेपर्स वगैरह लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, वैसे आप भी रिसर्च करके करते हो? Yeah, मेरा already 3 publication है. I have 3 international publications. I can pass it on to all of you. You can just go through it. Okay, पूरा डिटेल में समझेगा कि नहीं पता नहीं, but you can go through it. Okay, I will send it on WhatsApp. कि अलग से आपने वो बुक दिखाया था. हाँ, वो yes, अलग yes, से yes. That was my PhD research. Okay, Anandita has not come to my home ना anytime, so बाकी लोग आए थे. तो बाद में कभी भी possible होगा तो you can come, I will show. Okay, my work is there. तो मेरा PhD का जो thesis बना था, that was only about 350 pages. But that was a very, very interesting experience. Okay, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था. I have a YouTube video also. मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था एक बीच में. I will share that video. वो भी देखना. Okay, it's about 20 minutes का कुछ ऐसा वीडियो है, तो मैं entire research I have explained over there. तो वो तुम लोग को समझ में आएगा. Okay, so these are examples which I am showing you. कि like
अगर इंटरेस्ट हो ना ऐसे फील्ड में तो काम कर सकते हैं. You just have to follow your basic qualification. Obviously 10th और 12th तो पहले करना ही है. After that you will go for graduation, post graduation. So during the course of these years, okay, during the course of these years you will actually specialize. अभी जैसे 10th standard में तुम लोग साइंस करके पढ़ रहे हो. Okay, if you like biological line में अगर जाओगे तो 11th 12th में you will take science in which you will have a subject called biology. अभी biology करके subject नहीं है तुम लोग. 11th 12th में you will have that. After that in BSc, within biology you will have a specific subject: botany, zoology, biochemistry, microbiology, life sciences. Okay, so you can select whichever you like and 3 साल का BSc कर सकते हो. Like I did in botany, plant sciences. Okay, उसके बाद MSc, and in MSc you will be a more specialized one. कि zoology किया तो within zoology which one, botany किया तो within botany which one, and then you will धीरे धीरे specialize. That's how the pattern is. Okay, so after your MSc or during your MSc, now these many of these research institutes they provide MSc courses also. तो BSc खत्म करके ऐसे इंस्टीट्यूट में MSc के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो वहाँ पे MSc भी पढ़ाई हो जाएगा और रिसर्च भी हो जाएगा. तो यू विल बी इन टच विद दो साइंटिस्ट, उनके लैब में डायरेक्ट काम करने मिलेगा, एंड यू विल गेट अ रिसर्च एक्सपीरियंस. ओके, एंड एज फार एज द मनी फैक्टर इज कंसर्न्ड, ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए अभी कोई भी स्कूल कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो फीस भरना ही होता है. सेम वे हियर इन दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑल्सो यू विल हैव टू पे अ फीस. बट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मेनी ऑफ देम, sometimes what happens is if you are academically good enough you can get a fellowship. So every month you will get some basic amount as a fellowship. तो फीस पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा. तो फाइनेंशियल सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. ओके, तो ये नहीं सोचना है कि अभी फाइनेंशियल इश्यू है तो मैं ऐसे बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकता करके, दैट यू डोंट हैव टू वरी. You be good in your studies, you will be supported. There are many such fellowship options. Okay, so let us take a look at some examples of institutes. Okay, see this. This is National Center for Cell Science at Pune. कितना बढ़िया बढ़िया कैंपस है पता है, NCCS Pune. There are many places where the campus is too good and ऐसे atmosphere में काम करने का मिले तो it is amazing. And there are many new institutes which are coming up in India also. Okay, then you have this one, NCBS and INSTEM at Bangalore, National Center for Biological Sciences. Okay, you can see amazing, beautiful, big campuses. Okay, and then you have this one, Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB at Hyderabad. ये सब गिने चुने 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं. ये 2 तुम लोग के टेक्स्ट बुक में था, एक मैंने अपनी तरफ से ऐड किया. Okay, there are many such institutes, ठीक है, which are there. The ones who were there earlier, all of you know my sister also, no? Vaishnavi ma'am, तुम लोग को सिखाई थी ना 9th standard में. She is also working in a research institute right now. She is doing her PhD. ICER at Tirupati, Indian Institute of Science Education and Research. Okay, तो उसका भी पूरा सेल बायोलॉजी पे ही काम है. She is doing a PhD on that. Okay, अच्छा 1 minute, डिस्कनेक्ट एंड रीजॉइन करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है. We'll continue.